तो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ऑफिस में या जहां भी हम काम करते हैं वहां ज्यादा असरदार कैसे बने, अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना कई सारे स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ रिसर्च पेपर्स, एक्सपर्ट्स की सलाह भी है, और ये सब फोकस करते हैं उत्पादकता पर, टीम को कैसे संभालें और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। तो हमारा मकसद ये है कि इन सब स्रोतों से ना वो सबसे काम की बातें, वो प्रैक्टिकल तरीके निकालें जिनसे काम थोड़ा आसान हो, बेहतर हो और स्ट्रेस भी कम हो। सही कहा। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले काम और समय का मैनेजमेंट। लगभग हर जगह यही सुनने को मिलता है कि प्लानिंग जरूरी है। हाँ। और सबसे बेसिक चीज टू डू लिस्ट बनाना। लगता तो बहुत सीधा साधा है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना लिस्ट के दिन शुरू करना मतलब एक तरह से दिशाहीन होना। ये तो है, मतलब पहला कदम तो यही है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद अगला और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कदम है प्राथमिकता तय करना। अच्छा, कैसे? कई तरीके हैं, जैसे वो आइजनहावर मैट्रिक्स है ना, जरूरी क्या है और तुरंत क्या करना है उसमें फर्क करना सिखाता है, या फिर वो ABC मेथड भी है। हाँ सुना है। पर एक तकनीक जो बार बार सामने आई है वो है पोमोडोरो। हाँ, वो 25 मिनट वाला। वही, काम को छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे 25 मिनट काम फिर 5 मिनट का ब्रेक। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिसर्च कहती है कि इसका फायदा सिर्फ ब्रेक में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि हर 25 मिनट बाद फिर से काम शुरू करने की जो एक मेंटल रुकावट होती है ना, उसे तोड़ने में है। इससे टाल मटोल कम होती है, ऐसा मानते हैं। ये दिलचस्प है। और एक चीज जो मुझे कई स्रोतों में मिली और थोड़ी चौंकाने वाली भी लगी, वो है मल्टीटास्किंग के बारे में। ओह हाँ, मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में माहिर है ना। बिल्कुल। पर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। शायद सिर्फ 2.5% लोग ही हैं जो इसे ठीक से कर पाते। बस 2.5%? हाँ, बाकी सबके लिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना, जिसे मोनोटास्किंग कहते हैं, वो ज्यादा फायदेमंद है। काम की क्वालिटी भी सुधरती है और दिमाग भी कम थकता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और बात है, बैचिंग। बैचिंग मतलब एक जैसे कामों को इकट्ठा करके एक साथ निपटाना। हाँ। जैसे सारे ईमेल चेक करने हैं तो एक ही स्लॉट में कर लिए, या फोन कॉल्स करनी है तो एक के बाद एक कर ली। अच्छा, हाँ, ताकि बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच न करना पड़े। एग्जैक्टली। और हाँ, डिस्ट्रैक्शंस, खासकर ये डिजिटल वाले, फोन नोटिफिकेशंस वगैरह, इनको कंट्रोल करना। जैसे दिन में तय कर लिया कि 2 बार ही ईमेल चेक करेंगे। ये छोटी छोटी आदतें हैं पर फर्क बड़ा ला सकती हैं। सही। अच्छा, तो ये तो हुई टाइम और काम संभालने की बात। अब जरा टीम पर आते हैं। टीम के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, इस पर क्या खास मिला स्रोतों में? यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनने और समझने पे बहुत जोर दिया गया है। एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, सामने वाले की बात को समझना जरूरी है। बल्कि कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि हम बातचीत का मुश्किल से आधा हिस्सा ही ठीक से समझ पाते हैं। सच में? आधा? हाँ। और फिर ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और रेगुलर साफ साफ बातचीत, ये टीम में भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब लोगों को पता होता है ना कि उनका काम कंपनी के बड़े लक्ष्यों से कैसे जुड़ रहा है, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। और फीडबैक का लेना देना भी इसी का हिस्सा हुआ फिर, है ना? चाहे तारीफ हो या कुछ सुधार की बात हो। बिल्कुल। और मैनेजर्स के लिए एक और बड़ी कला है काम सौंपना, डेलीगेशन। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ये जानना कि कौन सा काम देना है, किसको देना है, इंस्ट्रक्शंस कितने क्लियर हों। और वो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली बात भी आती है। भरोसा करो पर नजर भी रखो कि काम हो रहा है या नहीं। सही। और एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है प्रामाणिकता। मतलब लीडर जब थोड़ा खुलकर अपनी कमजोरियां भी बताता है ना कभी-कभी, तो टीम का भरोसा और बढ़ता है। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट है, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, और इन सब के बीच ना हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं। क्या? अपनी देखभाल, पर्सनल वेलबींग और विकास। हाँ, ये तो है। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, जैसे वो पोमोडोरो में भी था, वो सिर्फ आराम के लिए नहीं है, दिमाग को रीसेट करने के लिए भी जरूरी है। थोड़ी देर बाहर निकलकर ताजी हवा में या धूप में रहना, या जब स्ट्रेस लगे तो बस 2-4 गहरी सांसें लेना, ये छोटी चीजें मूड और फोकस दोनों सुधार सकती हैं। सही बात है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, नींद पूरी लेना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद से अच्छी तरह बात करना, ये सब भी हमारी ओवरऑल क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं? उसे बनाए रखना और ये पहचानना कि कब वो बिगड़ रहा है, जैसे लगातार थकान रहना, अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना, या काम से कभी डिस्कनेक्ट ही न हो पाना।
इन सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी है, वरना बर्नआउट हो सकता है। बर्नआउट आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और इसके साथ ही करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखते रहना, नए स्किल्स डेवलप करना, ये भी उतना ही जरूरी बताया गया है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो सार यही निकलता है कि दफ्तर में कामयाबी सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके अपनाने, अच्छे से बातचीत करने, टीम के साथ मिलकर काम करने और हाँ, अपना ख्याल रखने, इन सब के सही मिक्सचर से मिलती है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही असल कला है। तरीके तो हमने डिस्कस किए, पर यहाँ एक सवाल और उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? क्या सिर्फ स्मार्ट तरीके से काम करना ही लंबे समय तक सफलता की गारंटी है? कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि शायद नहीं। स्मार्ट वर्क से जो बढ़त मिलती है वो शायद टेम्पररी हो। अच्छा, तो फिर? तो क्या असली कुंजी कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम दोनों के संतुलन में है? क्या टिकाऊ सफलता के लिए दोनों का मेल जरूरी है? ये एक सोचने वाली बात है। काम वाली ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਤੇ ਨੋਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਮੋਡੋਰੋ ਤਕਨੀਕ, 25 ਮਿੰਟ ਕੰਮ 5 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਡੈਸਕ ਹੋਵੇ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਸਕ ਬੈਚਿੰਗ। ਟਾਸਕ ਬੈਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਤੈਅ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤ ਨਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ EI ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, EI ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ EI ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਫਟੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-on-1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ EI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ,
ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਅਚੀਵੇਬਲ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, SBI ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇੰਪੈਕਟ। SBI ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਸਰਾਹਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡੈਸਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਦੇ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੋਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕੁਆਇਟ ਜ਼ੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਕਲਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਨਆਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲकुल, इस बारे सोचना दिलचस्प रहेगा। खुशामदीद। आज हम एक गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं काम की जगह पर बेहतर कारकर्दगी के मौजू पर। हमने इस पर काफ़ी कुछ देखा है, मज़ामीन, रिपोर्ट्स, गाइड्स वगैरह। मकसद ये है कि इनमें से वो ख़ास बातें और हिकमत अमलिया निकाली जाएं जो काम पर, आप जानते हैं, कामयाबी और इत्मीनान बढ़ा सकें। वैसे एक तहकीक बताती है कि जब मुलाजमीन काम से लाताल्लुक से होते हैं ना, तो कंपनियों को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं कि काम को ज्यादा मुअस्सिर कैसे बनाया जाए। जी, ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है। शुरुआत शायद मौसर इंतज़ाम और क़यादत से करनी चाहिए। कई ज़राए इस पर मुत्तफ़िक हैं कि सबसे पहले तो अहदाफ बिल्कुल वाज़े हों, और सिर्फ वाज़े नहीं बल्कि तंजीम के जो बड़े मकासद हैं ना, उनसे जुड़े हुए हों। मतलब हर मुलाजिम को ये समझ आना चाहिए कि उनका काम क्यों ज़रूरी है, बड़ी तस्वीर में कहाँ है। अच्छा, तो सिर्फ टास्क देना काफ़ी नहीं, उन्हें ये भी बताना है कि उनका काम अहम क्यों है, और टीम में वो जो एतमाद वाली बात होती है उसका क्या किरदार है। हाँ, एतमाद तो वो तो बहुत ही कलीदी है। ज़राए बताते हैं कि शफ़ाफियत यानी खुली बातचीत, एहतिसाब का माहौल, ये चीज़ें टीम को जोड़ती हैं। और मौसर बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि फ़ाल समात यानी दूसरों की बात को गौर से सुनना और फिर तामीरी अंदाज में राय देना, ये भी शामिल है। कुछ लोग तब्दीली लाने वाली क़यादत यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की भी बात करते हैं, जो टीम को इंस्पायर करती है। सही। और अगर टीम में कोई मुश्किल फर्द हो, उससे कैसे निपटा जाए? देखें, मशवरा यही है कि रवैये पर तवज्जो दें, मसले को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, बातचीत करें वाज़े तौर पर और हाँ, निजी तौर पर। एक और अहम चीज़ है वफ्त सपारी, मतलब काम दूसरों को सौंपना। इसका ये मतलब नहीं कि बस काम दे दिया और भूल गए, नहीं, नताइज पर तवज्जो हो, लोगों को काम करने की आज़ादी दें, उन पर भरोसा करें, लेकिन साथ साथ देखते भी रहें कि काम ट्रैक पर है या नहीं। ठीक है, ये तो वे क़यादत और इंतज़ाम की। अब आते हैं ज़रा ज़ाती सतह पर, यानी ज़ाती पैदावारीत और वक्त का बेहतर इस्तेमाल।
पहला कदम तो शायद यही है कि समझा जाए कौन सा काम ज्यादा अहम है, कौन सा ज्यादा फौरी है ना? बिल्कुल, तरजीहात तय करना। हाँ, जैसे वो आइजनहावर मैट्रिक्स है, कामों को 4 हिस्सों में बांटना, जरूरी और फौरी, जरूरी मगर गैर फौरी वगैरह। या फिर वो ABCD तरीका भी है, मकसद यही कि पता हो पहले क्या करना है। जी, और आजकल एक बड़ा मसला है खल्फशार का। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तवज्जो रखना मुश्किल हो जाता है। ओ हाँ बिल्कुल, फोन नोटिफिकेशंस, मेज पर फैला सामान। मशवरा यही है कि इन चीजों को कम किया जाए। फोन साइलेंट पर, काम की जगह साफ। तवज्जो के लिए कुछ तकनीकें भी हैं, जैसे वो पोमोडोरो, 25 मिनट काम, 5 मिनट वक्फा। हाँ, या टाइम बॉक्सिंग, यानी हर काम के लिए वक्त मुकर्रर करना। सही। और एक साथ बहुत से काम करने से, यानी मल्टीटास्किंग से गुरेज करना बेहतर है। बिल्कुल। और एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है तवानाई का इंतजाम। सिर्फ वक्त नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना है। बाकायदा वक्फे लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और काम मुनज़्ज़म करने की कुछ और तरीके भी हैं, जैसे मिलते जुलते काम इकट्ठे करना, बैचिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बैचिंग। और वो 2 मिनट वाला उसूल भी है। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो फौरन कर लें, इंतजार ना करें। और एक वो मशहूर है, ईट दैट फ्रॉग, दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म करें। जी, ताकि वो दिन भर जहन पर सवार ना रहे। हाँ, और बजाय सिर्फ एक लंबी टू डू लिस्ट बनाने के, कामों को अपने कैलेंडर में शेड्यूल करना ज्यादा मौसर हो सकता है। ये सब तो हो गई जाती कोशिशें, लेकिन जाहिर है काम की जगह का माहौल भी इतना ही अहम है। मुलाजिमीन की हौसला अफजाई, उनकी फलाह बहबूद, उसके बगैर ये सब अधूरा है। अहम है कि मुलाजिमीन को ये एहसास हो कि उनका काम बड़े मकसद में कैसे फिट होता है। अच्छा, यानी काम को बामकसद बनाना। और तारीफ वगैरह का क्या किरदार है हौसला अफजाई में? बहुत अहम। कभी कभी तो सिर्फ एक मुखलिस शुक्रिया भी बहुत फर्क डालता है। लेकिन अगर इनामात इनफरादी पसंद के मुताबिक हों तो वो ज्यादा मुअस्सर होते हैं। और साथ ही मुलाजमीन को सीखने और आगे बढ़ने के मौके देना, पेशावराना तरक्की, ये भी हौसला बढ़ाता है। तो मजमूई तौर पर माहौल कैसा होना चाहिए? देखिए, एक मजबूत माहौल जहां ताउन की हौसला अफजाई हो, तनाव को कम करने पर तवज्जो हो, और वो जो कहते हैं ना, काम और जिंदगी में तवाजुन, वर्क लाइफ बैलेंस। जी, वर्क लाइफ बैलेंस, उसको फरोग दिया जाए। और हाँ, मजबूत रवैया, ये खुद एक बड़ी तहरीक है। आखिर में जाती सेहत का ख्याल रखना, नींद पूरी करना, वर्जिश, अच्छी खुराक, ये सब चीजें बराह रास्त पैदावारियत पर असर डालती हैं। तो खुलासा अगर करें तो काम की जगह पर कामयाबी के लिए ना ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। वाज़े अहदाफ, जाती तवज्जो, एक मावन क़यादत और सेहत का ख्याल रखना, ये सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज की गुफ्तगू से ये बात तो साफ है कि इंतज़ामी अंदाज हो, ज़ाती आदात हों या काम करने के तरीके, इनमें छोटी छोटी तब्दीलियां भी कारकर्दगी और इत्मीनान पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। और आखिर में बस एक सोचने की बात, कामयाबी सिर्फ सख्त मेहनत का नाम नहीं है। होशियारी से काम करना, अपनी तवानाई को समझना और मुसलसल सीखते रहना, ये भी इतना ही अहम है। तो सवाल ये बनता है कि आज अपने काम करने के अंदाज में वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली लाई जा सकती है जो मुस्तकबिल में सबसे बड़ा फर्क पैदा कर दे। Welcome to the deep dive. Today we've got this really interesting stack of sources you shared with us. They cover a lot: productivity, time management, leadership, team dynamics. It's a big field. It really is. And there's so much advice out there, isn't there? Everyone telling you how to do better, how to manage work, how to lead. It can get pretty noisy. Yeah, exactly. So our mission today is to cut through some of that noise. We want to unpack these sources, pull out the really crucial nuggets of knowledge, maybe find some surprising bits. And hopefully help you feel well informed without having to wade through everything yourself. We'll look for the connections, what it all means practically. Sounds good. Let's dive in. So first things first, the sources spend a bit of time just making sure we're on the same page with some core ideas. Productivity and efficiency, they come up constantly. And they're often used, well, almost interchangeably, but the sources draw a really key distinction. Right. So productivity, they're saying, isn't just ticking boxes. Not at all. It's about focusing your effort on accomplishing important things. Things that have real impact on your goals, your growth, even your relationships outside work. It's about that feeling of real accomplishment, not just busyness. Okay, so doing the right things. Precisely. Right. And efficiency then is about doing
those things, or any task really, in the right way. Optimizing the process, minimizing wasted time or energy or resources. It's like a well-oiled machine. Exactly. Getting the maximum output for the input. Okay. So I could be super efficient at, I don't know, alphabetizing my spice rack, but if that doesn't actually help me achieve anything important. You're being efficiently unproductive, yeah. The sources really hammer home that being productive, focusing on those important things is the key. It's the foundation for making the most of your time and what some sources call working smarter. Got it. Okay, so with that clarity, a huge chunk of these sources focuses on managing your own work effectively. And the skill that just keeps coming up is prioritization. It seems absolutely foundational based on this material. They really stress how that feeling of being swamped by deadlines and workload can just paralyze you. It's a huge productivity killer. Yeah, and if you don't know what's truly important, you're lost when inevitably things change or a crisis hits, you can't adapt. Right. And there's a direct link to burnout drawn here. One source cited a statistic, something like 29% of knowledge workers experiencing burnout pointed specifically to a lack of clarity. Unclear tasks, unclear roles, basically unclear priorities. Wow, 29%. That really puts a finer point on it. It's not just about getting stuff done, it's about mental well-being too. Absolutely. So the sources offer a whole range of techniques. Some are pretty straightforward, like, just making a to-do list and ordering it by importance. Maybe picking your top 3 most vital tasks each day. Or breaking down those huge, intimidating projects into smaller, bite-sized pieces makes it easier to estimate time and just less scary to start. Then you get into the more structured approaches. The Eisenhower matrix seemed quite prominent. Ah, yes, the urgent, important grid. Exactly. That 2x2 box. Yeah. Urgent and important. Do it now. Important but not urgent. Schedule it. Urgent but not important. Delegate if you can, or maybe eliminate. And not urgent and not important. Delete it. It forces you to really think about urgency versus actual importance, right? Which isn't always the same thing. That's the core benefit, yeah. Yeah. We often react to urgency. This helps focus on true impact. Then there's the ABCDE method simple ranking. A for most critical down to E for eliminate. Gives you a clear path. And the wonderfully named Eat the Frog. Yes. Yeah. Do your most dreaded, most challenging, probably most important task first thing. Get it out of the way. Why does that work so well, according to the sources? It tackles procrastination head on. Completing that big thing builds momentum, clears mental space, and often makes the rest of the day feel, well, comparatively easier. Makes sense. Other methods mentioned were looking at urgency, impact, and effort together, sort of a 3-dimensional prioritization. Right, prioritizing things that are time-sensitive, high impact, or maybe low effort, but still impactful. And the MIT method, most important tasks. Similar to the top 3 idea, focusing laser-like on what truly moves the needle today. And for people whose heads are just swimming with tasks, GTD. Getting things done. Yeah, that's about the brain dump. Getting everything out of your head, ideas, tasks, reminders, capturing it all externally. Then you process it systematically. Is it actionable? What's the next step? Does it belong to a project? Or is it just reference? The idea being get it out of your mind so you can actually focus on doing, not just remembering. Exactly. Freeing up that mental bandwidth. Okay, so you figured out what to do. The next layer is managing when and how you do it, maintaining focus. Time management techniques are huge here. Definitely. The Pomodoro technique comes up a lot. Working in focus bursts, like 25 minutes, then a short break. Repeat. What's the magic in that rhythm? It seems to create a sense of urgency within each block. Helps combat procrastination. The regular short breaks prevent burnout. Let your mind reset a bit. Some sources even suggest breaks boost creativity. Interesting. And time blocking, that's mentioned quite a bit too. Yeah, basically scheduling specific chunks of time in your calendar for specific types of tasks. Like 9:10 a.m. is for email, 10:12 is deep work on Project X. Treating your focus time like a meeting you wouldn't skip. Pretty much. It helps you stick to a plan, allocate time realistically, and prevents getting bogged down in one thing for too long. Creates structure. And related to that, batching tasks. Grouping similar things together. Right. This tackles the cost of context switching. Jumping between writing, analyzing data, answering emails, it uses different mental muscles, and switching is draining. So do all your emails at once or make all your calls in one block. Exactly. Reduces that mental friction, makes you more efficient within that type of task. Speaking of friction, the sources also spend time on avoiding unnecessary meetings. A classic time sink. Oh yeah, highlighted as a major drain. They fragment your day, pull you away from focused work. The advice is basically, be ruthless.
Does this meeting need to happen? Does it need to be this long? Can it be an email? Okay, prioritize, time blocked. But then the phone buzzes or someone stops by your desk. Distractions. Right. They seem like the nemesis of all this planning. They really are. The sources paint them as silent productivity assassins, whether it's digital pings or physical interruptions. One estimate mentioned was pretty shocking, potentially costing over 2 hours per worker per day. 2 hours, wow. Just lost to distractions. Adds up incredibly fast, doesn't it? Yeah. So the strategies are about being proactive. Identify your biggest distractions and eliminate them. Turn off notifications you don't absolutely need. Maybe use website blockers during focus time. And your physical environment matters too, right? A tidy, dedicated workspace. Definitely. Minimizes visual clutter, which can also be mentally cluttering. And crucially, communicate your focus needs. Let colleagues know when you need uninterrupted time. Use signals headphones, closing a door if possible. Setting those boundaries respectfully. And beyond the techniques themselves, the sources also talk about tools and routines. Right, not necessarily complex software, sometimes just pen and paper. Absolutely. A simple notebook for a to-do list or GTD capture can be incredibly effective. Or, sure, use apps, project management software, calendar tools, whatever actually supports your way of working. The tool should serve the system, not the other way around. Using your calendar seems key, not just for meetings, but blocking your own focus time, even scheduling short breaks. Reinforces the value of that time. And email management gets some practical tips too, using flags, folders, rules, quick actions to process efficiently, not letting the inbox dictate your day. Voice to text for quick replies was an interesting one mentioned, reducing that typing friction. Yeah, small hacks can add up, and routines, particularly the morning routine, are emphasized quite strongly. How you start the day sets the tone. Seems to be the idea. Poll results mention things like coffee tea rituals, setting daily intentions, exercise, meditation. Also, things like consistent sleep and avoiding the snooze button are linked to starting the day with more clarity and energy. And knowing yourself is part of this too, isn't it? Like tackling your hardest frog task when you know you're naturally most alert. Exactly. Playing to your strengths, managing your energy cycles, and finally, automation. Looking for any repetitive, low-value tasks you can automate to free up time for more important work. That's a big part of working smarter. Okay, so that's a deep dive into the individual side. But these sources make it really clear that productivity isn't just about personal habits. It's massively influenced by your team, your leader, the whole environment. Yeah, the focus really shifts here to collective effectiveness. Team management isn't just an add-on task. It requires deliberate effort. Setting clear expectations, monitoring progress supportively, motivating, guiding. A key point seemed to be that leaders need to actually make time to lead. Be visible, be available, not just bury leadership duties under their own task list. Precisely. And the sources detail several core skills for managers that directly boost team productivity. Communication is, well, number one. The driving force for everything else. Using the right tools, especially for remote teams. Being mindful of time zones, ensuring clarity. And delegation. This came up repeatedly. Good managers don't hoard tasks. They delegate strategically. Not just to offload work, but to develop skills in others, show trust. Exactly. It frees the manager for higher-level strategic thinking that's smart work, again, while empowering the team. But how you delegate matters. Clear expectations, check-ins, but avoiding micromanagement. Coaching through questions was suggested, helping people find their own solutions. Feedback also seems critical, both positive and constructive. Essential for growth. Positive feedback needs to be genuine and specific, not just good job. Point out the action and the positive impact. And constructive feedback, that can be tricky. It needs to be timely, focused on the behavior, not the person, and delivered with the aim of helping them improve or solve a problem. The SBI method situation, behavior, impact, was highlighted as a useful research-backed structure for that. It makes the conversation objective. And feedback is a natural time to revisit goals too. Listening and involving your team is another big one. Don't just dictate. Right. Actively ask for input. Maybe poll the team on challenges. It helps spot problems early, and when people feel heard and involved, they take more ownership. Recognition follows naturally from that, acknowledging good work. Huge for morale and engagement. Reduces stress, makes people feel valued. And tailor it. Public praise works for some, a quiet thank you for others. Sincerity is key. Empowering people, giving them autonomy that seems linked to job satisfaction too. Definitely. And empowering them around their own career development, showing the company invests in their future. Which leads to encouraging growth training, upskilling, cross-training.
Yeah, building capability benefits everyone. The employee grows, the company gets a more flexible, skilled workforce. Providing resources like workshops or coaching supports this. And networking both inside and outside the company helps broaden perspectives, find mentors. Leaders can facilitate that. The sources also touch briefly on management styles, consultative, transformational, servant leadership, laissez-faire. The point wasn't that one is best, but that the style needs to fit the team and the situation. And there's a list of qualities effective leaders tend to share: honesty, clear communication, expertise, consistency, vision, courage, accountability, decisiveness, and prioritization, bringing it back to the individual skills. Right. And leadership is also framed in terms of meeting fundamental employee needs, almost like Maslow's hierarchy applied to work. Basic needs like salary and safety, then security, then belonging through teamwork and inclusion, esteem through recognition and development, and finally self-actualization through challenging work, autonomy, and a sense of purpose or vision. So, inspiring leaders are the ones who focus on people, communicate that vision clearly, listen with empathy, treat people like humans, admit mistakes, ask for feedback, and trust their teams. Exactly. And workplace ethics are tied into this as well. High ethical standards, modeled from the top: integrity, respect, accountability. They boost satisfaction and productivity. People work harder when they trust the organization and its leaders. And finally, just creating a positive work environment overall, fostering good relationships, encouraging interaction, promoting well-being. These things reduce stress, lift moods, build resilience, all essential ingredients for sustained, productive work. A toxic environment just drains everyone. Okay, so pulling all these threads together, the ultimate message seems to be about combining hard work and smart work. That's a good summary, yeah. Smart work is all the strategic stuff: planning, prioritizing effectively, using the right techniques and tools, being efficient with your effort. It's the thinking behind the doing. Right. And hard work is the actual effort. The commitment, the perseverance, the discipline to push through challenges and execute the plan. You need both. You can't just strategize forever, and you can't just grind away inefficiently. Exactly. The sources suggest real success comes from integrating them, applying that hard work intelligently and strategically to get the biggest impact. That synergy is the goal. Right. Okay, so let's just quickly recap this deep dive. We started by nailing down the difference between productivity, doing the important stuff, and efficiency, doing stuff well. Then we went through a whole arsenal of individual techniques. Prioritization methods like Eisenhower and Eat the Frog, time management like Pomodoro and time blocking, managing those pesky distractions, and building supportive routines and using tools smartly. But we saw it's not just individual hacks. The team environment and leadership are absolutely crucial. We covered effective communication, delegation, feedback, listening, recognition, empowering people, fostering growth, and creating that positive ethical climate. Yeah, the qualities of good leaders, different management styles, how they meet employee needs it all ties directly back to whether a team can actually be productive together. The big picture takeaway seems to be that peak productivity, individually and collectively, isn't just about speed or volume. It's about focusing on the right things, using smart strategies to get them done, and doing it all within an environment that supports and enables people to do their best work. It's a whole system. It really is. So as you think about putting these insights from the sources into practice, here's a final thought to consider. We know individual habits matter, and we know the environment matters. Beyond tweaking your own routines, how might you actively influence the systems, the culture, the leadership interactions around you in your team, in your workplace, to help create an environment where everyone can be more productive and make a bigger impact together? Something definitely worth thinking about. Welcome to the Deep Dive. Today we're jumping into a whole stack of sources you sent us, all about getting things done, really. Boosting productivity, managing time better, and handling the people side of work too. Think of this as a shortcut to working smarter, not just harder. Exactly. And these sources, they offer a really interesting mix, don't they? Everything from personal productivity hacks to broader team leadership ideas. So our mission here is to pull out the key nuggets, see how they connect, and give you some genuinely actionable stuff. Okay, let's unpack this. A huge theme that just leaps out is prioritization. Why is it so vital? Well, the sources seem pretty clear. It stops you feeling totally overwhelmed, avoids getting stuck, and ultimately prevents burnout.
Absolutely. It's fundamentally about sorting out what's genuinely important versus what just feels urgent. And what's interesting is how the sources discuss familiar tools, like the Eisenhower matrix. It's not just the 4 boxes. They really stress how using those delegate and eliminate options, the not important tasks, is often overlooked, but key to freeing up time. Right, the stuff you maybe shouldn't be doing at all. Precisely. Then there's Eat the Frog, tackling the dreaded task first. But the sources add a nuance. It's often the task with the most mental resistance, not necessarily the absolute hardest one. Okay, that makes sense. And the MIT method. Yeah, the most important tasks. Focusing on just 3 daily ensures you actually make consistent progress on what, moves the needle. So for you listening, it's not just about listing tasks. It's about having a system, understanding why it works according to these sources, to really focus your energy effectively. And moving from what to do to, how to do it efficiently. That brings us to time management techniques. Yeah, this is where it gets really practical. Things like the Pomodoro technique. Right. Working in focused bursts, often 25 minutes, then taking short breaks. But the key thing highlighted is the structured break. It's essential for cognitive recovery, apparently, something people often skip. I can see that. And time blocking. Sounds a bit more rigid. It is, but the sources frame it as a commitment, scheduling specific tasks for specific times, like an unbreakable appointment. Okay. And batching. Oh yeah, grouping similar tasks, like answering all your emails in one go. The sources stress this minimizes that mental drain from constantly switching contexts. And of course, avoiding unnecessary meetings keeps coming up. A classic. So the goal is structure, maximizing focus, and avoiding that scattered feeling that leads to burnout. Exactly. And speaking of focus, minimizing distractions is another big one. Yeah, the sources really hammer home how much they hurt productivity. And it's not just phone notifications, is it? It can be people, colleagues stopping by, family if you're remote. True. The strategies suggested are practical. Communicating boundaries clearly, maybe using headphones as a signal, finding a quiet space if you can, and definitely being ruthless with turning off non-essential digital alerts. One source even tried to quantify the time lost regaining focus after just one interruption. It makes a strong case for being proactive. Definitely. Now, the sources also get into the people factor. Yeah. Leadership, team dynamics. Yes, how all that impacts productivity and well-being. Effective feedback is a core piece. And it's not just saying good job or do better, right? The sources talk about how to give feedback. Right. It needs to be timely, specific, focused on behavior, not like personality traits. Yeah. The SBI method situation, behavior, impact, gets mentioned as a structured way to do this clearly and objectively. Okay, SBI. Got it. What about delegation? Crucial for managers, according to these materials. It's not just about offloading work. It's framed as empowering your team, building their skills, showing trust. And it frees you up for more strategic thinking. Which leads to a bigger point from the sources. How does just fostering good relationships and valuing people actually boost productivity? Well, the connection made repeatedly is through things like open communication, active listening, asking good questions, recognizing contributions. All these things reduce stress, build psychological safety, boost engagement, and that underpins sustainable performance. Okay, so we've covered a lot. Personal strategies like prioritization and time management, Pomodoro, batching, all the way to leadership actions like giving good feedback, delegating well, and building strong relationships. It really seems like being intentional is the common thread, doesn't it? Intentionally scheduling, intentionally communicating. Yes, exactly. Applying these ideas thoughtfully, not just ticking boxes. And if we pull back for a final thought, drawing from these sources, consider this. If productivity is partly about optimizing resources for output, but these sources also weave in employee well-being and social aspects as vital, then what's the real measure of success? Is it just hitting the numbers, or is it creating an environment where people thrive while hitting those numbers? Something to think about. Okay, let's dive in. We've got quite the stack of sources here today. Articles, some research, your notes, all centered on, making work actually work better for us. It's a fascinating mix, definitely. Covers the whole range, really, from, personal productivity hacks right up to team dynamics and what makes a positive work environment tick. Right. And our mission here, for you listening, is to unpack all this and pull out the most valuable bits. Sort of like a shortcut through the noise to get you the gold nuggets of knowledge on these really crucial topics. We'll definitely explore those connections, how managing your own time,
links directly to leading a team well, how positive relationships are pretty fundamental to everything, and yeah, some practical strategies for dealing with challenges. Okay, so let's get into this stack and see what these sources say is most important for you to know. Let's start with the individual. Seems like a good place. Several sources really hammered home the importance of time itself, like fundamentally. Absolutely. That really stood out. Time is described repeatedly, not just as like a limited resource, but actually as life's most precious gift. Even the key to success. One source, I think it was in Hindi, specifically mentioned that using time correctly provides the structure you need to, well, organize tasks, hit goals, and for personal growth. And it's not just about doing more, is it? That was a key point. One source defined productivity less by the number of tasks checked off and more by focusing only on getting the important things done. That's quite a shift. Exactly, which leads straight into prioritization. The sources were pretty unanimous on this, calling it essential for, understanding time's value and making sure the critical stuff actually happens on schedule. And what's really interesting is the variety of techniques these sources offered for actually doing that prioritizing. It wasn't just one method. Well, quite a few. A really basic one mentioned is distinguishing between urgent and important. The experts cited agree, the truly important stuff often isn't the most urgent, but the urgent things tend to scream the loudest. Right, they dominate. Yeah. And frameworks like Covey's time management matrix or the Eisenhower matrix were brought up. That Eisenhower one is that visual grid, right? Urgent important, not urgent important. Do, schedule, delegate, delete. Yeah. Exactly. The idea being consciously putting tasks in those boxes forces you to decide the right action, especially pushing you away from the not important stuff. Then there were simpler methods too, like just ranking things. The ABCDE method, A for most vital, E for least. Seems useful just for creating a clear daily roadmap. A clear roadmap, right. And for tackling those big, maybe slightly scary tasks, the eat the frog technique came up. Oh yeah, do the worst thing first. Get it out of the way, basically. Makes the rest of the day feel easier. Another one, the Ivy Lee method, was about listing just 6 key tasks for tomorrow at the end of today, then tackling them in order. Simple, but focused. What about grouping tasks? Yes, batching. Grouping similar tasks, like answering emails all at once to avoid that mental gear shifting constantly, reduces the drain. And the Pomodoro technique, little bursts of focus. Traditionally, 25 minutes of focused work, then a short break. One source mentioned it's even helpful for remote work, helps maintain focus, prevents burnout by creating a rhythm. You can adjust the times, of course. Regular breaks are key. So it seems like prioritization is one piece, scheduling is another. The sources stressed actually blocking out time for important work, protecting it. And using a time log, maybe, to figure out your peak productivity times, which ties into understanding your individual work style. How so? Well, knowing your strengths, weaknesses, when you have the most energy, it helps you decide when to tackle certain types of tasks. Maybe you save the low energy stuff for, the afternoon slump. Makes sense. And distractions, always a battle. Oh yeah, the sources hit that hard. Email was a big one, needing an organization system. And physical space too. Visual clutter, a messy desk, apparently makes it harder to focus. Mental clutter follows. And the myth of multitasking. Debunked, pretty much. The sources suggest it just drains energy and makes work take longer. Better to stick to one thing or use that batching technique. So pulling this together, the idea of working smart came up. Not just long hours. Exactly. Working more effectively. That Stanford study mentioned productivity dropping off after 50 hours a week really backs that up. It's not about sheer time invested. So the takeaway for you listening, on this personal level, it's about being intentional, using techniques that resonate with your style to control your time and focus, working smarter, like the sources say. Okay, so let's broaden out from the individual, because these sources make it really clear. Individual productivity is great, but it gets amplified massively within effective teams. Right. Team management. The sources described it as the skills and strategies leaders use to coordinate people towards a goal, but crucially, while fostering collaboration, it's not just direction. Yeah, effective managers were described more like coaches, recognizing wins, encouraging growth, making sure everyone's pulling in the same direction as the organization, and setting clear expectations from day one is fundamental, sets the standard. And communication just seemed huge in these sources, called the driving force for everything at work. Essential for team success, obviously, but also just for building trust. Absolutely paramount. Clarity, keeping people updated on goals, priorities, deadlines, but also
encouraging questions, even criticism, making it a two-way street. Being accessible, approachable. Exactly. That transparency and accountability, the sources argue, it doesn't just solve problems faster, it actually brings teams closer, builds real trust. Delegation was another big one for leaders. The perspective wasn't just get rid of work, but realizing you can't do it all. It's vital for getting projects done and managing your own time. And, crucially, the sources added that when done well, delegation is about empowerment. It gives team members ownership, encourages creativity, helps them develop new skills. They suggested delegating recurring things, tasks that align with someone's interests, or things tied to team goals. But the leader, still owns the outcome. Performance management came up, described as a structured process, but the emphasis seemed to be on ongoing feedback, not just annual reviews. That's where the power is, according to this material. Feedback is critical for team success. It drives continuous improvement, strengthens trust, and continuous feedback lets people adjust quickly. And balanced feedback too, right? Not just criticism. Yes, balanced. Positive reinforcement and constructive points. Using specific examples so it's clear and actionable, and making it a discussion, not just a download. Two-way communication. Team goals also got highlighted. Making sure they're achievable, obviously, but also aligned with a bigger company picture. And tracking progress keeps people focused. And finally, for leaders, problem solving. That ability to think on your feet when things inevitably go sideways, use context, figure out what needs fixing first. Essential decision making. So whether you're leading a team or you're part of one, the message from these sources seems to be, it really hinges on clear communication, smart delegation that empowers, good feedback loops, and making sure individual effort lines up with shared goals. It's a collective thing. Okay, so moving beyond the how-to of tasks and team structure, the sources really emphasize the environment where work happens, a positive work culture. It wasn't just seen as nice, but defined by shared values, beliefs, attitudes that genuinely guide how people interact. And positive relationships within that culture, absolutely critical. The sources were blunt, they give you energy, negative ones drain it, so fostering positive connections should be a key goal for leaders. Definitely. And core elements of that positive environment mentioned were transparency, accountability, and this concept of psychological safety. Explain that a bit more. Well, it's when employees feel safe enough to voice concerns, maybe pitch a slightly out there idea, or even admit they messed up without fearing punishment or humiliation. The sources argue that when you have that safety, people are way more likely to be engaged, productive, even innovative, like feeling okay asking for help instead of struggling alone. That makes a huge difference. What about conflict? It happens. Acknowledge it is inevitable, yeah. But the sources really push for collaboration as the ideal way to handle most workplace conflicts, trying to prioritize both the goal and the relationship. If a true win-win isn't possible, then compromise is the next best thing. Leaders need to help people navigate this calmly. And mindset. That keeps coming up. Consistently linked to success. Positive thinking seen as like steering life in the right direction, helping solve problems. Specific advice included surrounding yourself with positive coworkers, using positive affirmations, especially when things get tough. Gratitude was mentioned too as a way to focus on the good stuff, shift away from negative loops, and setting small achievable goals to build that sense of progress and maintain a positive outlook. Which flows really naturally into work-life balance and preventing burnout. And the sources were clear. Balance isn't necessarily about working less, it's about taking care of yourself so you can sustain high performance over the long haul. Right, it's about sustainability. They offered practical steps too. Setting boundaries, really setting them, avoiding work email on time off, properly disconnecting. And for leaders, ensuring predictable time off for their teams, encouraging them to set boundaries, manage notifications. It's key to preventing collective burnout. Prioritizing health came through strongly as well. Things like flexible hours where possible, thinking about meeting structures, ergonomic furniture, wellness programs. And the basics: eating well, exercising, and especially sleep. The sources cited studies showing 7 to 9 hours a night significantly improves problem solving and memory. It's the foundation for everything else. Finally, career development was tied into this positive environment. Continuous learning is just essential now. Yeah, upskilling, reskilling, cross-training, giving employees the tools to grow, which also helps the organization with continuity and developing talent. And empowering people to create their own development plans while providing resources like workshops or coaching shows that company investment. It feeds back into that positive culture and reputation. Wow. Okay, that was a pretty packed deep dive. We went all the way from individual time hacks and focus techniques through leading and working within teams effectively.
and landed on the really crucial stuff around workplace culture, positive relationships, and just taking care of ourselves. And the big message seems to be how linked it all is, right? Your personal productivity isn't separate from your well-being or how your team functions or the overall vibe of the workplace. Exactly. It's all interconnected. These sources paint a picture where improving one area often has positive effects on the others. And it's not just leadership's job. These sources suggest we all have a hand in creating a workplace that's productive, positive, and supportive, from managing our own focus to how we interact day to day. Yeah, this deep dive from your sources offered a real wealth of practical strategies and important reminders. From using something like the Eisenhower Matrix for tasks to fostering psychological safety in teams, right down to just remembering the power of positive thinking or getting enough sleep. So here's a final thought for you to chew on based on everything we've unpacked. If optimizing your work, building better teams, and creating these positive environments means paying attention to all these connected pieces from your to-do list, right up to your team's trust levels, which one area, just one single area from this deep dive, could you focus on improving today that might create the biggest positive ripple effect for you? Thank you for providing the sources for this exploration. We genuinely hope these insights are immediately valuable and give you something practical to work with.